So welcome all of you for this evening session on mindfulness or mindfulness English. जो आपको ठीक लगे. So today we are going to basically talk about general problems जो generally सब लोग face करते हैं. That is depression, stress, and today depression has become such a big challenge कि आजकल पहले तो बड़ों में देखा जाता है. पहले तो था ही नहीं डिप्रेशन. किस चिड़िया का नाम था पता नहीं. We never knew what depression is. But आज the situation gone to such a bad state that we are seeing even small children are having depression. And what is the reason for this depression? Why are we suffering from this depression? Nobody knows. And what are the characteristics of this depression? We will understand today first, and then we will go ahead on how to solve the problem. First, we have to identify the problem. क्या problem है? How do we identify the problem? That's the bigger task. You know, when you go to the doctor, what's the difference between a doctor and a good doctor? क्या फर्क है? डॉक्टर में और अच्छे डॉक्टर में क्या अंतर है? डायग्नोसिस. दवाई तो शेल्फ में है, केमिस्ट के पास दवाई अवेलेबल है, बट जो पहले देखते ही नहीं आपको ये फलाना ये प्रॉब्लम है, दैट मीन्स इज अ गुड डॉक्टर. अदरवाइज ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, ब्लड टेस्ट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, बट इट्स मोर इन आइडेंटिफाइंग द डिसीज. उस पे जोर ज्यादा रहता है. So today we will try to understand what this disease is, and then of course we will try to see what alternative method by which we can handle this problem. किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वी आर यूजिंग इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल और यूजफुल. सो depression basically a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness, loss of interest in things and activities you once enjoyed. हम लोग कई बार हम लोग we are all right, health wise we are feeling fit, बढ़िया चल रहा है, बट कोई पूछा कैसा है तो खासकर फ्रेंड के साथ आप क्या बोलेंगे? मजा नहीं आता है, आज ठीक नहीं लग रहा है. So why this problem? क्यों ठीक नहीं लग रहा? कुछ कारण होना चाहिए. Your blood pressure is normal, your ECG is normal, your blood reports are normal, सब कुछ ठीक है, but still you feel, या ज्यादा एक extended word will be, आज कुछ मन ठीक नहीं है. So means what? This body and man are little different things to be handled or to be understood. Problem of this stress, depression, the solution is not easy because अगर आप किसी को मलेरिया हो जाए या टाइफाइड हो जाए या कोई भी तरह का बीमारी हो जाए, मतलब उसका कॉज पता है. जैसे मलेरिया मतलब मच्छर से हो रहा है, चलो डेंगू है तो डेंगू मच्छर से हो रहा है. So there is a specific reason behind that. But when it comes to stress, depression, loneliness, उसका पीछे कारण क्या होता है? What could be the reason? Is it breeding in some laboratory? Is it some coronavirus type virus? What is it? Why are we not able to catch that disease? That makes this disease unique. आप इस डिसीज का कोई भी ब्लड टेस्ट करा के देख लो, कैन यू आइडेंटिफाई? हाँ, ये इसका ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आया है इसको डिप्रेशन है, या इसका ब्लड टेस्ट में ब्लड शुगर में या ब्लड टेस्ट में पता चला है कि उसको स्ट्रेस है. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई. दैट्स द बेस्ट पार्ट. इट इज अ साइलेंट किलर. इट इज स्लोली डेली इरोडिंग यू, थोड़ा करके खा रहा है. नो, बड़े बुजुर्ग कहते थे चिता में तो एक बार जलना रहता है, बट चिंता में हर मिनट चलना है. और हर व्यक्ति किसी ना किसी चिंता में हर मिनट चल ही रहा है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाई दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रॉब्लम, डिफरेंट टू द नॉर्मल प्रॉब्लम्स. बाकी नी प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, यू हैव सेट ऑफ मेडिसिन इन द शेल्फ, आपको खा लो, यू डेफिनेटली गेट सम रिलीफ.
Secondly, of course, as per the medical science, it has been divided into clinical depression, which is the most common thing. Clinical depression is the most common thing. Now, what is clinical depression? क्या है clinical depression? क्या है? It's a situation wherein आपको अकेलापन महसूस होता है. You feel you're very lonely. You feel you're very stressed out. You feel loss of appetite or extreme appetite. बहुत भूख लगता है, खा रहे हो, या total loss of appetite. Then there are symptoms like you lose interest in activities. जो चीज आप कर रहे थे, शायद watching a movie or going out for a game or going to the gym, whatever your activities were, you will have a loss in interest in those activities. कोई बोलेगा चल चलते हैं, घूमने जाते हैं, या इधर जाते हैं, वहां जाते हैं, you tend to negate it. नहीं, मुझे नहीं जाना या मुझे नहीं करना. So these are the general symptoms, and because of eating disorders, you tend to lose weight or you tend to gain weight. There are two extremities which happen. So this is also another problem. But the most subtle problem is people get suicidal tendencies. This is a very, very dangerous problem. And today, I don't know how many of you know this, IIT Kota. So at Kota, right? Kota mein Kota. They have banned exams for 2 months or 3 months. Yes. Because so many students have committed suicide. And who are they? कोई साधारण students हैं क्या? All IITian level students. So supposed to be the most creamy, brainy people, and they have committed suicide. So this is a part of this depression or stress. There is a very subtle difference between depression and stress. One may say, "अरे प्रभु जी, stress तो हम लोग पे work pressure ज़्यादा है या too much of expectation." It is because of that only one person goes into depression. It's both are interconnected. Then there is something called as persistent depressive disorder, which lasts for a long time. बहुत सालों से वो चल रहा है, and it can be there up to 2 or 3 years. This depression can exist. And there is the third, which is very, very funny. That is called as bipolar. Now, what is this bipolar? Bipolar में कभी-कभी आदमी opposite view करता है. He becomes overactive. It is also called as maniac depressive disease. It's a very funny situation where the person shows the opposite of depression symptoms, like unrealistic high esteem. Then he has got decrease in need of sleep. डिप्रेशन वाला आदमी ज्यादा सोता है, बट वो व्यक्ति क्या बोलता है, मुझे नींद की जरूरत नहीं, 3 घंटा नींद बस हो गया. आई एम एक्टिव, हाइपर एक्टिव, एंड बिलीव इट और नॉट, he can go on a high speed and even go on a pursuit for pleasure, which includes even sex drive. So these are the things which are opposite to a person what a depressive person may exhibit, but even that is also a form of depression, but it is the opposite. A person depression may lose interest in everything, but this fellow will show an artificial or an hyperactive attraction towards those things. So these are a few types. I mean, if you go into that, then there is something called as PMS, that is called as premenstrual syndromes. Then there is prenatal or postnatal depressions. So many varieties. There is endless. But what is common in all? In all of them, the only one common factor is it is related to the mind. The best part is it's related to the mind. It's not related to your body. It's not related to anything else. It's only related to your mind. आपके दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है. Now, generally इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? Antidepressant pills दे दिए जाते हैं. Many people must have taken or must have heard about this. People who are in depression taking antidepressant pills. But what is the formula in which, or what is the technique in which these antidepressant pills work? They work basically on increasing your neurotransmitters. These are neurotransmitters which
It's like when you see a rasgulla or you see pav bhaji, and the minute it goes to the brain, there's a increase of neurotransmitters which sends signals to your tongue, and your mouth starts watering, and your mind says, "Oh, come on, let me have that pav bhaji, let me have that sweet, whatever it is." The bottom line is neurotransmitters are increased, but still you are not able to solve the problem. Now, one may wonder, Prabhu, you basically are a person from the spiritual background. How can you give solutions to respect to these clinical problems? They come under category of clinical problems. So for that you will have to understand one thing. How many of you have ever read the Bhagavad Gita? I'm asking the newcomers. Have you ever read the Bhagavad Gita by chance? कभी पढ़े हैं आप लोग ने Bhagavad Gita? Tried. Would I continue? No. Why I'm saying you have failed? I was guaranteed. I'm sure about it, because in today's date, if one wants to read ABCD also, उसको टीचर की जरूरत पड़ती है. और इतना बड़ा ग्रंथ बिना टीचर के कैसे पढ़ सकते हैं? सिंपल. आज ABCD के लिए लाख रुपए भरना पड़ता है. प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी में लाखों रुपया भरना पड़ता है. Just for learning your basic ABCD. What to talk about higher studies? And if you want to do an MBA, today is 25-30 lakhs minimum. And वहाँ इतना खर्चा करके इतना टीचर इतना सेमिनार्स लेके then they teach you whatever that material knowledge is. और ये ग्रंथ को सीखने के लिए my teacher says I have learned only 5% till now. So what to talk about me? I have not learned anything. So this is how Bhagavad Gita needs to be studied under a bona fide spiritual master. You need a master. Without a master upon self, you cannot. It's like if I tell you, madam, you know English. आप एक काम करो, सीए का बुक्स ले लो, सीए बन जाओ, या मेडिकल का बुक्स ले लो, डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियरिंग बुक के ले लो और इंजीनियर बन जाओ. क्या पॉसिबल है? Just by knowing a language, you cannot become an expert in anything. Similarly, Bhagavad Gita one should endeavor to study. It's a very important integral part of one's life. But it is difficult to learn on one's endeavor. You need to study it under some guidance. That's the most important. So now why we can correlate this problem of the mind with respect to the Bhagavad Gita. We'll understand this first. सबको इतना तो पता है, भगवद गीता महाभारत युद्ध के दौरान बोला गया. During the Mahabharata war, the very first day, Arjuna first told Krishna, I want to सबको ठीक करता हूँ, because this was long awaited. बहुत सालों से 12 years, 13 years they were in वनवास, तो बदला लेने का जोश था. So and they were already insulted, cheated, everything was happened. So they were just waiting for a chance to fight back. So immediately Arjuna goes and tells Krishna, come on, take me in front of the enemies. आज ठीक करता हूँ. Let me see who are those who want to fight with me. And so Krishna also nicely takes him in front of the army. And वहाँ पे he shows all the symptoms of depression. What happens? He says, no, how can I kill my uncle, my grandfather, my teacher, my this and that? I rather beg and live. Why should I kill them? It will be sinful. 2 minutes पहले बोल रहा है, I want to see who are the enemies, I want to fight. When preparing for the war के लिए preparation कुछ 1-2 दिन में तो होता नहीं. Yes, we are fighting a biggest world war. हमने आज तक का जो biggest world war है वो that was महाभारत. And उसका preparation कर रहे थे. And Pandavas had 7 Akshoni Senas and the Kauravas had 11 Akshoni Senas. One Akshoni Sena का पूरा डिटेल पढ़ना है, कभी गूगल करके देख लेना. It's a huge army. Foot soldiers, elephants, chariots, horse soldiers. It's a huge. ऐसे multiples levels में थे. So after all this, Arjuna is telling, I am afraid I cannot fight the war. I am indecisive about it. I cannot take a decision. How can I take a decision of fighting this war? And he showed all the symptoms, and then he was showing loss of interest also. I rather beg and live rather than taking the sin of killing these people.
So what happened was, he was not given any antidepressant pills. Neither was he sent for any psychiatric treatment. There was only one treatment, and that was the Bhagavad Gita. He just heard the Bhagavad Gita, and there he was back in action, and he won the war also. He was a hero of the war. Pura Mahabharat Yuddha ka hero kaun tha? So you have to understand that. So before we go further in understanding the solutions, let's understand two basic points. As we discussed, mind is the root cause of all these problems. Stress, anger, depression, all these are somewhere or the other related to each other. Then, is the mind and the brain same? Yes, what do you feel? Brain is a part of it's an organ. Yeah, it's an organ or anatomy of the body. Mind, it's very confusing. Like we say, dil. So dil actually basically it's just pumping blood. It's an organ. That heart is different. नहीं, that's what. So heart और दिल जो बोलते हैं, heart एक organ है. वो दिल यानी हमको जब दिल में प्यार होता है ये वो तो सही similar mind का भी ऐसा ही है कि mind exactly it's there's nothing kind of a physical thing, but it's just a thought. What we have in brain, that is a mind. Let's study what Shastra says. We will study that also. Yes, what do you think, sir? Same opinion. Same opinion. Thoughts हैं और brain एक organ. आपको क्या लगता है? Brain is the controlling the organs in the body, and mind. So basically, that is something which is like a CPU. It's a hard. It's a hard disk, or you can call it as a hard drive. Something that is the memory. It's a IT guy, so CPU and but define some command. That means what? Mind is different to the brain. And when the problem is in the mind, what is the use of treating the brain? Please repeat, sir. Please repeat. It can be very clearly understood. Mind and brain are two different things. Agreed? उसमें कोई doubt नहीं है. Mind is something, as he says, is not gross, it's subtle. Yes, it's true. Lord confirms this. I'll tell you the details further. It's there in the Bhagavad Gita. Whereas आप अगर brain का देखते हो, तो वो एक स्थूल चीज है. Okay, that can be cut open and seen. But you are perfectly normal. और आप बोल रहे हो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मन ठीक नहीं लग रहा है, मन चंचल लग रहा है या मन घबरा रहा है, whatever you call it. Can you take that out and show it to us? Can anyone show it? If there is a pain, you can tell this pinpoint place I am having a pain. That's something perfect, gross. But this is something called subtle. जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर कहता है I am intelligent. अब इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या दो सिंह अलग रहते हैं क्या? How will you find his intelligence? How will you judge his intelligence? In which way will you judge his intelligence? By his action and activities. तभी उसका पता चलता है. ऐसा नहीं कि आप उसको ब्रेन खोल के देखो, हाँ इसमें इंटेलिजेंस कम है, इसमें इंटेलिजेंस ज्यादा है. You can't download intelligence from the net and put it on the thing, or you can't inject some intelligence in that. So what I'm trying to say is, mind is different, brain is different. And what is happening is, medical science, no doubt, we can't overrule medical science. It is an integral part of our day-to-day life. We have to take support of medical science also, with respect to all ailments, all ailments. Even I have to go to a doctor when I'm not well. It's not that, no, my mind is different, so I don't need a doctor. No, you can't say that. जैसे आपका गाड़ी खराब हो जाता है तो you have to take it to the garage or to the mechanic to get it repaired. You can't say no, it is different, it will run off its own. It's not possible. So our body, as a whole body in the sense, will require some update or treatment will be required. But when the problem is with the mind or a thinking process, can you give the same medicine which you are giving to the mind? To the brain, the same medicine you can give to the mind. That is where
identification of the problem is. Why people want spiritual knowledge or spiritual growth? क्यों आज भी? So you see thousands of foreigners coming and trying to learn. You go to Banaras, you go to Gaya, you go to Haridwar, you go to Rishikesh, so many places. Why you see so many foreigners are coming and trying to understand? क्या जानना चाहते हैं? अरे भाई, the latest phones आपके वहां पहले आते हैं. The latest चीजें जो भी हैं, हम लोग को जो चीज हमको fascinate कर रही है, what things we get fascinated. इसलिए तो हम लोग मॉर्निंग वॉक में ये डिस्कस होता है. मैं लास्ट वीक अमेरिका जाके, हाँ बस, मैं स्विट्जरलैंड जाके, तीसरा नहीं तो स्विट्जरलैंड जाके, तो मैं यूरोप जाके आया. What is that? We are fascinated with that. Whatever shining and blooming things are there, we are fascinated towards that. But what is the problem? Where is the problem lying? The problem is lying in the mind. The problem is not lying in the organ, the body. That is why, as I mentioned earlier, उसका blood pressure normal है, उसका blood report normal है, but फिर भी आप खुद भी, even if it's maybe a small boy, young boy, खा पी के खुश है, सब कुछ बढ़िया खाना खाया, everything is normal in his life, but still मन में क्या बोलते हैं? मन ठीक. That is where we have to understand why is the problem, why there is a problem in this mind. Where is this problem coming from? कि कहां से आ रहे हैं problem? That is what we have to understand first. That हम क्या है पहला? Who are we first? हम क्या है? We are a soul. हम आत्मा है. So basically यहाँ पे तीन चीज का कॉम्बिनेशन एक शरीर के अंदर. One is the soul या आत्मा. वो सोल आत्मा अकेला रह नहीं सकता है, तो उसको एक शरीर के अंदर डाला गया है. एंड व्हाट इज दैट शरीर? जो 5 तत्वों से बना है. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. नाउ व्हाट इज, लेट्स डिस्कस दिस शॉर्टली. अर्थ मटेरियल क्या है? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भूमि आपो अनुलो वायु हम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति अष्टद. सो देयर आर 8 एलिमेंट्स टोटल इन आवर बॉडी. आत्मा के अलावा टोटल 8 थिंग्स आते हैं. 5 ग्रॉस, 3 सटल. वो 3 सटल क्या है? एंड प्रॉब्लम यहां पे है, हम ये 5 ग्रॉस को लेके बैठे, बिकॉज वी थिंक द प्रॉब्लम लाइज इन दिस. भूमि आपो अनुलो वायु. व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूमि? अर्थ. व्हाट इज द अर्थ मटेरियल इन आवर बॉडी? सॉइल. अर्थ क्या कौन सा है? Whatever we eat, the body. No, I'm talking of this body. Skin, you just rub, थोड़ा मट्टी निकलेगा. हड्डियों में देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों को देखना, मट्टी खाएंगे. क्यों? कैल्शियम. So one has to understand that these things are from the earth. So we depend on a lot of things on the earth. Water, no big guesses. Blood itself, saliva, all urine, everything is the water material. Earth, water, fire. Fire का कहां पे? Stomach. वो सब तो बात की बात है. पहला चीज जब बुखार आ जाता है, how do you find out that he is not well? The fire, the temperature goes up. What if the temperature goes 0? That means fire is required. You cannot stay without fire. But when there is an imbalance in fire, जब आपकी अग्नि बढ़ जाती है तो भी प्रॉब्लम है, घटती है तो भी प्रॉब्लम. So earth, water, fire, air. There are 5 kinds of air which is there inside our body. Prana, Apan, Saman, Vadan, Udan. All these 5 kinds of air totally make our body. We can hold our body because of this 5 kinds of air. And उसके वजह से सब कुछ काम हो रहा है. And last but not the least, ether. Ether means open space. Now what is that open space? Just imagine our digestive system. When we are eating, the food is going inside. And after that वो चपक जाता है. तो वापस कैसे जाएगा नेक्स्ट टाइम? जैसे आपका टूथपेस्ट निकलने के बाद चपक जाता है. Can it take it back?
That is why there is ether in our body. Ether means space. Jo, it keeps all our unused. When we are not using it, that time also it keeps it open. So these are the 5 gross things which are there in the body. But additional to that, there are 3 subtle things. Subtle मतलब जो चीज आपको आंखों से दिख नहीं रही है, but है. जैसे आज अगर कोई कहे प्रभु जी यहाँ हवा नहीं है, दिख तो नहीं रहा, but कैसे पता चल रहा है? जब पंखा डालते हो, you feel yes, there is something which is hitting me, and that is what is air or breeze, whatever you call it. So please understand 3 subtle things: mind, intelligence, and ego. There are 3 things. कौन सा है? Mind, intelligence, and ego. Problem mind का तो पहला है ही है. No, what is the difference between mind and intelligence? Can you anyone differentiate me or tell me the difference between both? Mind and intelligence का difference क्या है? Anybody? Ability to differentiate right and wrong is intelligence. And then what is mind? Then why do we need mind? What is the purpose of mind? Intelligence is a virtue of mind. Lord clearly says. कई बार इंटेलिजेंट व्यक्ति भी बेवकूफ वाला काम कर देता है. क्यों? We have seen this, right? इंटेलिजेंट आदमी है, अकलमंद है, बड़ा खिलाड़ी है इस लाइन का, मगर फिर भी एक गलत डिसीजन हो जाता है और पूरा मामला गड़बड़ा जाता है. Why? What could be the reason? Simple question, no rocket science. Judgment. Because of the wrong judgment. तो गलती किधर है? इंटेलिजेंस में है या माइंड में? माइंड अगर अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, तो why we are confused? Please remember one thing: the job of the mind is only to desire and to will. Lord clearly says, माइंड का दिमाग का काम क्या है? That is not दिमाग, sorry. मन का काम क्या है? Only to desire. आप खाना खा के निकले हो बाहर, चल रहे हो, पेट भरा है, आइसक्रीम का दुकान दिखा, ड्राइव, चलो आइसक्रीम खाते हैं. भूख तो नहीं है, ना ही आपको जरूरत है. ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड शुगर, लेट्स से आपको ब्लड शुगर भी है, फिर भी माइंड क्या बोल रहा है? चलो लेट्स हैव आइसक्रीम. बट देन इंटेलिजेंस टेक्स ओवर. इंटेलिजेंस सेज नो, प्लीज आज मत खाना, कल एग्जाम है या कल इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है, सर्दी हो जाएगा तो, या यू आर नॉट वेल, योर ब्लड शुगर इज हाई, डोंट डू. मतलब द इंटेलिजेंस डिमार्केट्स. कभी कभी इंटेलिजेंस बोलती है ठीक खा ले, बहुत दिन हो गए खा लेते हैं. देन द माइंड, सो इट्स लाइक a petition put by the mind and the intelligence approves it or disapproves it. So these are the 2 basic difference between mind and intelligence. And last is ego. Lord says, "Kham mano buddhi evacha." So why this? What is the need for ahankar? क्यों? ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना, उसको बोलते ईगो ज्यादा है, ईगो छोड़ देना चाहिए, सब दुनिया मोह माया है. सुनते रहते हैं ना, फ्री में व्हाट्सएप में आते रहते हैं ना, ऐसा तो प्रवचन ज्यादा आता है. हमारा प्रवचन कम, ऐसा प्रवचन ज्यादा आता है. और भगवान बोलते हैं ईगो व्यक्ति को मैंने दिया है. क्यों? व्हाई? गलत चीज होता तो भगवान क्यों देते हैं हमको ईगो? इफ इट वाज रॉन्ग, व्हाई वुड गॉड गिव? ईगो मीन्स इट गिव्स यू एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. अगर आपका ईगो चला जाएगा तो आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा. सो ईगो मीन्स, यस, दैट इज व्हाई यू सी इवन अ चाइल्ड, छोटा सा बच्चे को आप गोद में लिया, यू नो, जस्ट क्लैप इट, गुस्सा है, यू कैन सी दैट एंगर इन द चाइल्ड्स फेस. दैट्स ईगो. द चाइल्ड फील्स दैट तुम मुझे मारा, अरे है इतना सा, हाँ इतना सा है, बट फिर भी द चाइल्ड फील्स यू हिट मी और यू पंच मी. गुस्सा means what? That is ego. So please understand, there is a gross body and there is a subtle body. The problem is not in the gross, the problem is in the subtle, and that too in the mind. So one question, very important, very old, very common question which we Iskcon people always ask, but it's very important to be asked for the new ones. What's the difference between human beings and animals?
difference between human beings and animals. इंसानों में और जानवर में क्या अंतर है? Human being has the intelligence. हाँ, और जानवरों नहीं है. आपको पता है, मुझे यहाँ से अगर आपके घर पे जाना है तो मुझे जीपीएस का सहारा लेना पड़ता है. And the birds from Kutch come from Siberia without a GPS. हर साल बराबर आ जाते हैं. तो who is more intelligent? अगर मर्डर होता है तो किसको बुलाते हैं? इंसान को या कुत्ता को? कुत्ते को बुलाते हैं. भाई सूंघ के पता कर कौन है खूनी. तो who is more intelligent? Dog or इंसान? So how do you understand? So how do we understand? तो इंसान और जानवर में अंतर है. चलो, अगर 2 पैकेट में मैंने आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिया, दोनों नमक और शक्कर जैसे दिखने वाले, बट आपको पता नहीं वो नमक है या शक्कर है. चींटी को पता चलता है बराबर वो शक्कर के पास ही जाएगा, नमक के पास नहीं जाएगा. और इंसान को दोनों चाट के देखना पड़ेगा, पहले मालूम पड़ता है. तो अकलमंद कौन है, चींटी है या हम? सो what is the difference between humans and animals? How do you find out that? Yes, Manoj, बोलिए. What's the difference? Power of discrimination. Power of discrimination. इतना power of discrimination है मंदा जी. सिगरेट के पैकेट के ऊपर ब्यूटीफुल फोटो रहता है, इतना लिखा रहता है क्लियरली इन बोल्ड लैंग्वेज में लिखा रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. और सब जगह देखा भी है उसने कि हाँ भाई वो फलाने को कैंसर हो गया, इसको हो गया, वो हो गया. फिर भी where does this discrimination go to? क्योंकि विवेक बुद्धि यूज नहीं कर. माता जी, we are talking of intelligent, educated people, supposed to be, in some big post or big. तो विवेक बुद्धि को यूज इस्तेमाल करना. Vivek is the Hindi word. English word is intelligence. Yeah. तो So उसको यूज करना. intelligence is existing. See, point is that is existing inside that. But that is not the difference. As per the Shastra, that is not the difference. Discrimination, understanding what is right and wrong. Maybe animal cannot understand right and wrong. What is right and what is wrong? How can you discriminate on what Now, if angle? we talk about I mean, that is a very perspective thing. Okay, now if we you're talking talk about a packet of cigarette, उसमें जो भी वार्निंग लिखी हुई है, जो पीने जा रहा है, ये उसका डिसीजन है. राइट और रॉन्ग वो ही डिसाइड करने वाला है whether he wants to go for that cigarette or not. Mataji, today, as per the latest statistics which has been come out in the magazines and the newspapers, that smoking in women has increased to men. And we are seeing that's nothing. It's not a hidden secret. It's an open secret now. Totally agree. So, what do we say? We are becoming more intelligent by adapting to these things, or is there some other problem? If we are saying earlier ladies were not educated, I'm talking of my grandmother's time, ladies were not that educated. Today, my daughter, everyone is educated. It has nothing to do with education because men earlier they were educated and they were smoking. So it has nothing to do with education. Then what is it got to do with? पावर आप सही और गलत पे फैसला नहीं कर पा रहे. But the entire society is drifting towards that. One should not drink and drive. One should not drink first and foremost. Then drink and drive is another bigger crime. But see, the sweep is towards that section. So what is missing? You are telling the answer. You are around the answer, but you are not. I want the answer from your mouth. That's the only thing I'm waiting for. I can give the answer in 1 split second and solve the problem. But कहते हैं ना, बच्चे के मुंह से, स्टूडेंट के मुंह से बात निकलती है ना, तो जिंदगी भर वो दिमाग में बैठा रहता है. That's the difference. Shastra says, ahar nidra bhaya maithun. Eating, sleeping, mating and defending. 4 things common between human beings and animals. Then what makes you a human being? What's so special? आप भी खाते हो, वो भी खाते हैं. आप भी सोते हो, वो भी सोते हैं. Might be you eat in a nice restaurant, in a nice AC and like Chinese and momos and this and that, Italian, Mexican, Lebanon, this and that. They may eat something which is given to them, which is available to them. One minute. Second, sleeping. Might be we sleep in a nice AC bedroom, nice mat, and they sleep somewhere in the road or jungle. Right? Mating. We also produce children. They also produce children. In fact, we are not producing that many children with the animals. And last but not the least,
इफ आई कम टू हिट यू, अगर मैं आपको मारने आऊं तो आप अपना बचाव करोगे। क्या जानवर नहीं करता अपना बचाव? यू गो एंड किक अ डॉग इन द रोड, either it will bite you or it will run away. So it is defending itself. हम भी वही करेंगे. If I come to hit you, either you will, if you find me weak, you will hit me back, and if you find me stronger, you will run away. तो शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज इंसानों में और जानवरों में कॉमन है. What makes you special? What is that special thing which was not there? Thinking. सोचने की शक्ति. धर्म अधिक विशेषो, धर्म अधिक विशेषो. इट इज धर्म. धर्म मीन्स डोंट थिंक ओ नारेबाजी करना, ना, दैट इज नॉट धर्म. धर्म मीन्स प्लीज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ड्यूटी. दैट इज विवेक. व्हाट इज योर राइटफुल ड्यूटी? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, your duty is to do the duties of your duties of a child, whatever the a child's duty are there, studying, playing, fine. Then as a boy or a girl, you have got your duty towards your parents. तो तभी एक ही धर्म है आपका, वो धर्म है, पिता धर्म या मातृ धर्म है. But then once you become big, you get married, शादी हो जाती है, फिर आपका धर्म बढ़ गया. अब क्या हो गया? ऐसे नहीं कि अभी माँ पिता का धर्म चर्चा हो गया, but it's an additional dharma of taking care of your spouse. The man has to take care of his wife, wife has to take care of his husband. So that's a next dharma. Then again you have kids, बच्चे. अब माता पिता बन गए, तो आप बच्चे नहीं रहे, बच्चे भी हैं, पति पत्नी भी हैं और माँ बाप भी हैं. So आपके that is dharma means धारेति की धर्म. That is your responsibility जो आपको निभाना है. इस तरह से आपके धर्म के प्रति, आपका समाज के प्रति, आपके देश के प्रति सारे धर्म आपको निभाना है. बट यू एज अ सोल, हु आर यू? A soul doesn't have a gender, you know that? It can be housed in a male body, it can be housed in a female body, and that is decided as per the law of karma. आप जो कर्म करते हो उस हिसाब से आपको एक तो स्त्री का शरीर मिलेगा या तो पुरुष का शरीर मिलेगा. So then, how do we understand that? Soul is basically a part of the Lord. Lord says in the 8th chapter, Mame vanshi jivaloke jivbhuta sanatana mana shashtani indriyani prakriti sthani kalashyati. Lord clearly says that I am an mamev ansh, mere ansh hai, fragmental parts are the beings. Whether be that soul may be in a donkey's body, in a monkey's body, in a bird's body, in a fish body, in a worm's body, or in a human body. That is why हम लोग शास्त्र के क्या कहते हैं, 84 लाख योनियों में से गुजर के इंसान का शरीर मिलता है. So you have to undergo all the bodies. Now that's a different subject matter. We'll discuss some other time. I don't want to confuse or incorporate that in this. We'll be losing time. So शास्त्र says कि आपका धर्म क्या है? What is your relation to identify or establish your relation as a soul with respect to the super soul? That is dharma. That is accepting the supremacy of God in your life. And today the society is going on accepting I am God myself. Retire God. We don't need God. And that is where the problem is rooted. उधर से आपका problem का शुरुआत हो. That is where it starts. So, now, when I am coming to the body and soul, I'll give you a small example to give a more clear understanding. गाड़ी है, क्या गाड़ी बिना ड्राइवर के 1 इंच आगे बढ़ सकता है क्या? आपने गाड़ी पार्क कर दिया, it's stagnant, stationary. But the minute the driver, might be you or your driver or anyone, one person has to sit, then only the vehicle can move. Similarly, this body is also like that. जब तक इस शरीर में आत्मा है, ये गाड़ी चल रही है. The minute the soul comes out of this body, what are you called? Body कितना बजे लेके आना है? आपका नाम भी खत्म हो जाता है. Your identification is lost. Right? That's what we asked, right? बॉडी कितना बजे ला रहे हैं? काका को कितना बजे ला रहे हैं? कोई नहीं बोलेगा.
कोई पत्नी नहीं बोलेगी मेरे पति को कितना बजे ला रहे हैं, उनका शरीर, उनका पार्थिव शरीर है. That this thing has lost its identification. The minute the soul leaves the body. अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति, अगर ये कोई यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ना लाश पड़ी है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे ये आदमी तो यहाँ पड़ा है, तो आप बोलेंगे नहीं वो तो चल बसे, ये उनका शरीर, ये उनका बॉडी है. So there is a difference. Now my question to you is, आप गाड़ी लेके गए पेट्रोल पंप में, 2000 रुपए का पेट्रोल भर देना, भर दिया उसको, और वही पेट्रोल पंप वाला आपको आके बोलता है सर आप मुंह खोलिए, 500 रुपए का पेट्रोल आपके मुंह में डालता हूं, चलेगा? आप बोलेंगे दादा मैं पेट्रोल थोड़ी खाता हूं, मैं तो साउथ इंडियन खाता हूं, चाइनीज खाता हूं, ये खाता हूं, वो खाता हूं, रोटी सब्जी खाता हूं, बट मैं ये नहीं खाता. फिर आप वही गाड़ी लेके आगे जाते हो, गो टू अ नाइस रेस्टोरेंट, वहां जाके काफी चीजें ऑर्डर करते हो आप, और वो चीजें आती है, एंड देन द वेटर सेज सर ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री दाल है, आपका गाड़ी का चाबी देना, पेट्रोल का टंकी में डालता हूं, चलेगा? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? अरे कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है. इंडिया में तो फ्री का आदत है, वी एक्सेप्ट एनीथिंग इज फ्री. वी गॉट अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फ्री. सी प्लीज अंडरस्टैंड, आप क्या बोलेंगे, अरे भाई उसका खुराक पेट्रोल है, मेरा खुराक दाल रोटी है. सिमिलरली प्लीज अंडरस्टैंड दिस, requirement of the body is different, the requirement of the soul is different. आप Amazon में, Flipkart में जो चाहिए शरीर के लिए मंगा सकते हो, आत्मा के लिए एक चीज मंगा के दिखाओ, is it available? मिलेगा? Good for the soul. अगर कोई चीज यूजफुल है सोल के लिए, तो then that is only and only spirituality. Because your soul is spiritual, it requires something spiritual. Your body is gross, you require something gross. Two different things, two different requirements. That is where you have to identify how this stress and all this are coming. Why? How does it generate? कहां से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है आपके अंदर? कहां से डिप्रेशन जनरेट हो रहा है? ये दुख, ये लोनलीनेस कहां से जनरेट हो रहा है? So it is said in Bhagavad Gita 5.22, it is said, if you want you can open the Bhagavad Gita, but since you are new, it will take time for you to open. But note it, 5.22, Lord clearly says, यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनि रेवते, आदि अंतवन्ते कौन्ते, न तेसु रमते बुधा. He says, यही संस्पर्श जब होगा, हम जिस भोग के लिए दिन भर भाग रहे हैं, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सा है? Let's say, nice food, nice clothing, nice car, nice house, everything nice. Is it related to your soul? No. It's only related to your body and a little way to your ego. मेरे पास बड़ी गाड़ी है. You know, there's a very old ad, अभी भी चलती है शायद, मेरी साड़ी इसकी साड़ी से सफेद कैसे? आज भी चल रही है. Why? That is ego. How can उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे हो सकती है? So what's the problem here? What's the problem? That is how stress starts. The problems start. And we are in a perpetual cycle. Permanent cycle. वहीं पे फंसे हुए हैं. And what does Bhagavad Gita say? Krishna says, यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनि रेवते, उससे आपको सिर्फ दुख मिलने वाला है. ये जो चीजें हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसके पीछे भागने से आपको सिर्फ और सिर्फ दुख मिलने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू गॉट iPhone 14 Pro, आ गया 14 Pro, आ गया 14 आ गया ना. तो जैसे ही the news comes, iPhone 15 launched, आपको सुख लगता है कि दुख लगता है? आज मेरा फ्रेंड्स कोई नहीं बोलेगा इस 14 को, कोई पूछेगा नहीं 15 has come along. The first 2 wheels of the car, of a new car, whatever make it may be, when it is out, what do you see? Launching, next brand is coming. थोड़ा दिन रुकता तब वो मिलता, रुकते रुकते पूरी जिंदगी निकल जाएगी. There is never an end to it. Go and ask the one who has bought the iPhone 1, what he will feel
when 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके 14 तक आके हम 15 आ गए, कैसा लगा उसको, कैसा लगा है? How much he should be in depression, right? Or is it worth the depression? क्या लायकियत है उसकी? और इन चीजों को लेके कोटा में बच्चे एडमिट जो IITians है उन्होंने आत्महत्या क्यों की? They had set up standard, my way or highway. Problem is, again and again we have to understand, we are heading towards a dead end without having any focus or goal. So that is why we feel so many times sad and unhappy. Pehle Doordarshan was having only one channel when I was a kid, black and white TV, but I was happy. वो भी 4 घंटा आता था, शाम को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक. So we didn't have much problem. But you know, my friends, my cousins used to come and tell, you know, we in our Dubai, in our US, we got so many channels, we got so many options. And I used to watch my TV, you know, my TV used to have that old khatka type channels, you know, khatak 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 कर घुमा सकते थे, and it used to have only 6 or 8 channels. मतलब ये कब चालू होगा? ये दिया किसने? एक ही चैनल आ रहा है दूरदर्शन और कुछ था नहीं. But today at this age, when I am seeing everyone's house, thanks to the so-called technology or modernism, we have got so many channels. But are you happy? Has your depression level gone down? चलो आज मैं depressed हूँ, चलो मैं serial देखता हूँ, चलो murder serial, you know, let's say romantic one, I'll see this, I'll see that. What is happening? यहाँ तक कि हॉरर देख के भी जाता नहीं है, खुश नहीं है. Why? I wonder why people see horror. Life itself is so horrifying. Why one wants to see horror and wants to derive happiness in that? उसमें खुशी कहाँ से मिलने वाली? But still, people, no. That's why you see. I mean, I'm sorry to say, but I think many ladies must have experienced this. No, you sit with the remote, kachak, 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 kachak. After 1 hour, you realize, अरे कुछ था ही नहीं. पहला चैनल से लेके लास्ट चैनल तक. Why? Expectation might be the next channel will give me happiness. But sorry. So in the end, what happens? कुछ भी अच्छा. दुख योनि रेवते भगवान ने 5000 साल पहले बोल दिया. Because when you are spiritual, you can't get happiness in gross things. And can someone who himself is sad, who himself is a human being and is sad, how can he give you happiness? I still remember because my father had a good connection with the Barjatias because of the circle. So when the movie was launched, Hum Aapke Hain Kaun? So I got a premium ticket and went to Pride of Maharashtra. वहाँ जाके had that seen that movie and you know all the celebrities were there. And then that उनका relative को मुझे बोल रहे थे, he has gone to US for a vacation. क्यों? नहीं, he is actually tired. 2 years he has been working on this project so hard that he has gone. मतलब पूरा दुनिया इसका पिक्चर देखे खुशी के लिए आ रही है और ये खुद जो पिक्चर बनाया वो गया है. So are we not confused in searching for happiness? क्या हम confused नहीं? This is how it is. So Lord says, okay, just 2 points I want to note before you go to the solutions. We are already a little running rate of time. We will be going 15-20 minutes more because we started late. 15-20 minutes ज़्यादा जाएगा. So Lord says two verses in the Bhagavad Gita regarding the mind. First is he says, Chanchalami mana Krishna pramati balva dridam tasyam nigrayavaya manne vayu iva sudushkaram. So Lord says, for the mind is restless, turbulent, obstinate and very strong. Oh Krishna, it is, and to subdue it, it's more difficult than controlling the wind. एक बार हवा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, it's also as good as impossible. But what is Arjuna saying? एक बार मैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा, but इस मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. एग्जाम्पल, अगर बच्चे को बोलो ना सोफा पे मत कूद, बस वो मम्मी उधर गई छड़ कूदे. क्यों? He gets divine happiness in that.
That is the problem in the mind. That's no other problem. उसको आपने बोल दिया ये मत कर, ये मत सोच, या ये मत कर, ये मत खा, वही खाएगा, वही करेगा. That is another problem with the mind. The mind is obstinate. Many times you may think, मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में, एंड में बार बार उसी के बारे में ना बोलते हुए आप सोचते हो. This is what has been identified by Arjuna 5,000 years before, and to that affirmation is given by Lord Krishna. He says असंशय महाबाहो. कृष्ण कहते हैं असंशय, कोई संशय नहीं है भैया, what you are saying is correct. असंशय महाबाहो मनो दुष्ट निग्रम चलम. The mind is uncontrollable and very very chanchal. But then he says two things. Abhyasena tu kaunteya, by practice, and vairagyena cha grihate, by detachment. So, in fact, instead of getting attached, it is better we get detached. The opposite of what the world does. General world does opposite, and Shastra says the exactly the opposite. Yahan pe the secret lies. Now we will go to the solutions what people take and what solutions the Shastra says. ये दो चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कई बार हम लोग कहते हैं डिप्रेशन होना अच्छी बात है. There is a good part in it. Now what is the good part? क्या बोले? हाँ, भगवान को याद करेंगे. वो टाइम पे तो कम से कम भगवान को याद करेंगे. हाँ, कुछ नहीं, ये दुनिया तो काम का नहीं, चल भगवान तू ही सही. एटलीस्ट इसी बहाने भगवान के पास तो आते हैं तो सही. That's one part. But उससे भी बड़ा part. People generally take up to intoxication, drinking. मैं बहुत डिप्रेस्ड है, मैं डूब जाता हूं. It's said, nicely said. I drank to drown my pain. I drank to drown my pain. But the pain learned to swim. But the pain learned to swim. वो जिस दर्द को मैं डुबाने के लिए मैं शराब पी रहा था, वो तो डूबा नहीं, वो तो तैरना सीख गया. मैं बर्बाद हो गया, मैं डूब गया. I don't know how many of you know the story of Meena Kumari. Very famous lady, famous actress. I think hardly there must be anyone who doesn't know who Meena Kumari was. And very fantastic actress. कहते हैं कि उसके एक्टिंग में इतना दम था कि अच्छे बड़े बड़े हीरो उस जमाने के, दिलीप कुमार एंड किशोर कुमार एंड ऑल दोस पीपल, दोस वेटरन एक्टर्स उस जमाने के, वो लोग अपने डायलॉग भूल जाते हैं उसके सामने. That was the charisma and the power of her acting. Such a great actress. And she was very sad because in her personal life, Kamal Amrohi had put total restrictions on her. So she was in a very bad state. She was very sad and she came into depression. And depression में आने के बाद उसका फ्रेंड ने एक अच्छा सलाह दिया, थोड़ा शराब पी. एंड में what happened? She died out of liver cirrhosis. Depression तो गया नहीं. She was sad up to the last breath. But what happened? She developed liver cirrhosis. Nobody will be knowing the actual fact of her life. The day when she died, down in South Mumbai in Elizabeth Hospital, when she died, there was nobody around her. अकेली मरी. और वो उसको दफनाने के लिए कोई था नहीं. There was nobody was, and such a rich lady supposed to be, but she didn't have any. Nobody was there. And in the end, one producer owed some money for a small role what she had paid, and उसमें her body was kept in a handcart and taken, and the last rites were done. What I'm trying to tell over here is, please understand, one may be successful in life. जीवन में कुछ पा ले कर ले, not a problem. You may achieve some success, material success. You may be a big businessman or a good stock market person or an IT person, whatever you are. But in the end, there is no guarantee that you will be able to control your mind. And if you don't control, this is what happens. So, जिंदगी में तकलीफ किसको नहीं आता है? Everyone gets problem. And for that, अगर solution अगर शराब है, so
ऐसे तो पांडवों को कितना शराब पीना चाहिए? अगर इस हिसाब से अगर शराब पीना ही है इस सोल्यूशन है, तो पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, बट दे नेवर ड्रैंक बिकॉज दे हैड समथिंग मोर बेटर. दे हैड लॉर्ड विद देम. उनके साथ भगवान थे. तो हम भी हमारे जीवन में भगवान लेके आए तो it will be much better and easier than going to all this bloody things. And कुछ लोग तो और एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन ढूंढते हैं, सुइसाइड. सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुइसाइड. बट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डिप्रेशन इज दैट यू आर लोनली इन अ रूम फुल ऑफ पीपल. कई बार हम लोग अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं. सब लोग हैं, रिश्ते नाते, पोते पोती, बच्चा, भाई बहन सब है, बट फिर भी हम लोग अपने आप को अकेला पाते हैं. हाँ, हम अकेला ही हैं. प्लीज एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट वी आर अलोन. शंकराचार्य सेज इन द Bhajagovinam, he says very nicely कि we think we are taken care of, our parents or relatives or people. I am very important person in my house. Go and ask one who is lying in a paralytic condition. घर में जो पड़ा है ना, उसको जाके पूछना घर वालों उसको कितना प्यार करते हैं, कितने उसके लिए दुआएं करते हैं. जल्दी उठा ले भगवान. करते हैं, बट कैसी दुआ करते हैं? इससे मेरे को छुटकारा मिला. सो दिस इज द बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग वी गेट, दैट दीज सॉल्यूशंस आर नॉट रियल सॉल्यूशंस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट नॉट बी नोइंग. शास्त्र में मेंशन है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो 10,000 वर्षों के लिए प्रेत योनि में जाता है. For 10,000 years he becomes a ghost, because what you kill is this body. You are not killing the soul. The soul can never die. इसीलिए हम न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं ना, नैनम जिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका चक्ले वदन्ति आपो न सरस्वती मारता, ये सब श्लोका डाल देते हैं शोक सभा में, नीचे प्रिंट कर देते हैं कि भाई निधन हो गया है और नीचे शोक. अरे भाई ये मरने वाला नहीं है, इंसान मरने वाला नहीं है. क्या मरता है? वो है शरीर. और भगवान ने पहले ही बोल दिया, अभी आपको शरीर दिया है मैं भोगने के लिए, चाहे वो दुख हो या सुख हो, भोगने के लिए मैंने आपको शरीर दिया है. और आप उस शरीर को, क्या आपकी प्रॉपर्टी है? वो इज द बॉडी योर प्रॉपर्टी? इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी. It has been given to you. It's like a leave on license property. So if you take a house on leave on license और वहां जाके खिड़की तोड़ोगे, दरवाजा तोड़ोगे, तो मकान मालिक क्या बोलेगा? चल निकल. You have no right. You can use, you can stay, you can use, but you can't mismanage or mishandle the things. That is why suicide, as per Shastra, is not allowed. It is the worst punishment you get after death. Now, let's go into the last phase of today's seminar, and that is free yourself from 3 fears. 3 तरह के डर हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स होते हैं. And what are the 3 fears? पहला चीज, okay, before going to those 3 fears, let me put one point. Why youngsters are getting this depression? What's the problem? I mean, there are so many parents over here, that's why I'm asking this question. Why children are getting this depression problem? Aspirations. Competition. Very good. Expectation, difference, gap in achievement and expectation. Very good. Something more. Fear. Lack of spiritual. No. That's not the full answer. I mean, what you are saying is all part by part, yes. The full thing you have to understand. Whenever your child is small, what is the first thing the child is taught? Especially those who are going to school, if any school going child will be there. Mummy daddy says, beta, 10th pass kar le, then life is. बेचारा सोच के 10 साल मर के पढ़ता है. एनएसएससी क्लियर होने के बाद बेटा 2 साल और 12th स्टैंडर्ड, देन लाइफ इज रॉकेट. फिर भी वापस 2 साल भर के पढ़ता है. अब इतना अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है, ऐसे डरबी के घोड़े पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे इन्वेस्ट हो चुका है. अब क्या करें? चलो
अब तुझे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, नो सो कॉल्ड सो मेनी फील्ड्स में तुझे जाना है। एक्सपेक्टेशन क्या बच्चे के अंदर था या उसके अंदर डाला गया? अगर बच्चे के अंदर हमने वो एक्सपेक्टेशन का बीज ही नहीं बोला होता, if the child was able to accept life the way it comes, would it not be easy? We have been always been teaching our child to go in life, not grow through life. Two different subjects. That's why हम लोग क्या कर रहे हैं, बेटा तेरे लिए मैंने एडमिशन के लिए मैंने पैसा जमा कर लिया, अब बच्चे को पढ़ना हो ना हो, माँ बाप ने इतना जमा किया, मुझे करना ही है इंजीनियरिंग, कि माँ बाप ने इतना पेट काट के रखा है मेरे लिए। अरे भाई व्हाई? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज हम लोगों ने उनके ऊपर एक चीज सिखा दी है कि तेरे पर और कोई नहीं है, यू आर द स्मार्टेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट। इफ यू टेल हिम एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड, देयर इज समथिंग सुपीरियर, एक भगवान आपके ऊपर बैठा हुआ है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर बच्चा ये समझ जाता है तो उसका जीवन मोर पीसफुल। इफ ही गेट्स देन आल्सो ही इज हैप्पी, इफ ही डजंट गेट देन आल्सो ही इज हैप्पी। दुख सुख समय कृत्वा लाभो अलाभो जयो अजयो तस्मै युज्यस्व न एवं पापो अवाप्स्यसि। लॉर्ड क्लियरली सेज इन द भगवद गीता, विदाउट सुख एंड दुख, विदाउट एक्सपेक्टेशन you will start a new venture business में, गारंटी है चलेगा, गारंटी है फ्लॉप होगा। You put your best and leave the rest on God. Anyone in life, what all you do is always there are two possibilities, this and this. You cannot say I will win, I will lose. You cannot say that. But you do your best and lest you leave it on God. But the problem is parents don't teach that. You have to win, you have to become an engineer, you have to do this, you have to do that. ये आपको किसी भी हालत में आपको प्राप्त करना ही है। And क्या करेगा आप? I am not fulfilling my parents' desires, but rather I would hang myself. Commit suicide. So actually, we are putting this pressure on the child. And now the three fears which we have to come out with, and that is one of the root cause of our problems. या हमारा दुख, हमारा स्ट्रेस जो भी है उसका कारण यही है। पॉइंट नंबर 1, living in the past. हम लोग सब अभी भी किधर ना किधर पास्ट में एक्टिव हैं। I'll tell you how. At some point of life, you should realize that some people can stay in your heart, but they cannot stay in your life. I've heard n number of cases where the child goes into depression on his parents' death, or the parents go into depression because of the child's death. So many things we hear. I mean, we all must have heard about it. मैं सुना है कि भाई घर के कोई करीबी गुजर गए, इसके लिए हम डिप्रेशन में चले गए। प्लीज अंडरस्टैंड, जिस दिन आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब बर्थडे डेट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डेट। ओके, तो जिस दिन आपका बर्थ डेट फिक्स हो जाता है उसी दिन आपका एक्सपायरी डेट भी फिक्स हो गया है। अच्छा है पता नहीं, बिकॉज वी कांट लिव। इफ समवन कम्स एंड टेल्स यू सर यू गॉट एक्जैक्टली 15 hours or 15 days, you will die this very moment, because मैं क्या करूं 15 दिन में, क्या करूं? So it's better we're not aware of our expiry date, but we are aware of our, that's why we celebrate birthday मनाते रहते हैं। So the problem is we want to live in the past. Example, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम पास्ट में ऐसा था एंड नाउ आज मुझे कोई पूछता नहीं है, आज मेरा जीवन में कोई I faded out in my life. I'm not that famous, that not required in the house. पहले बच्चे मुझे पूछ के करते थे, घर वाले सब मुझे पूछ के करते थे। Now नई बहू आ गई है, सास का पावर चला गया। All this happens. How is this? Is it really true? Please understand. Get out of this past. ये पिछले का जो सोच है ना, कई बार उससे हमको दुख होता है। या मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सोचा था वो बनूंगा, मैं बना नहीं बना तो नहीं बना, फाइन,
लोग वही पास्ट को सोचते 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 वी आर स्टक। दूसरा सबसे बड़ा रोग कहेंगे यह सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? You want to eat, let's say, it is said Meena Kumari used to wear a burqa and go in an Impala car. She had a nice Impala car. Not sorry, Meena Kumari. It was Madhubala. Who was she? The most beautiful heroine in the cinema world, and she was born with a hole in the heart, and she died very young. And her desire was she used to wear a burqa, and she used to go to eat pani puris. क्यों? मधुबाला कैसे जाके रास्ते में जाके पानी पूरी खा सकती? So she had to hide herself. And जब वो पानी पूरी वाला के पास पानी पूरी लेके खाने के बाद जब वो बुर्का उठाती ना, वो देख मधुबाला नहीं फ्री ली आप लेके जाओ. He was so happy like Madhubala has come, like some goddess Apsara has come to his shop. The point is, we have never understood what we want. We have always lived the life what others decide for us. If you wear a watch, the first thing you go to a shop or buy anything, what is the first thing which hits your mind? क्या सोच से आप लेते हो? मेरे दोस्त क्या बोलेंगे इसको लेके? क्या उनके मुकाबले में ये अच्छा है? क्या वो लोग उसको बोलेंगे अरे बेकार मॉडल लिया खत्म? भले वो 25,000 का घड़ी रहेगा, क्या बेकार मॉडल लिया है, दुखी हो जाएगा. और जिस दिन आपको बोला अरे अच्छा है, ध्यान आपका सफल हुआ. सो व्हाट हैपेंड, स्पेशली द यंगस्टर्स, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ प्रॉब्लम. दोस्तों के उम्मीदों पे खरे उतरते उतरते है ना, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई. जस्ट बिकॉज वी वांट टू स्टे इन देयर आइज एट देयर लेवल. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच वी फेस. These are the 3 jails, I tell you, these are the 3 jails. First is living in the past. That's a big jail. Just imagine if let's say Anil Ambani and Mukesh Ambani. What was the position of Anil Ambani a few years before, and today what is his position? Don't think this can happen only with him. It can happen with you and me also. हमारे साथ भी हो सकता है. कभी आप जीवन में ऊपर तो कभी आप जीवन में नीचे. और इसका कारण क्या है? इफ यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा फ्रॉम द भगवद गीता, यू विल नॉट हैव दिस टेंशन एट ऑल. कोई बड़ा मेहनत करता है, बहुत काम करता है पैसा कमाने के लिए. जस्ट इमेजिन यू जस्ट टेक बर्थ इन अमिताभ बच्चन हाउस और इन अंबानी हाउस. क्या मेहनत किया? कुछ भी नहीं. बैठे बैठे एवरीथिंग गोल्डन प्लेट. और दूसरा मतलब मैं मेहनत करके आगे आऊंगा, स्ट्राइव हार्ड. पूरा जीवन निकल गया उसका, और आंख खोलते ही वो हैप्पीनेस में. मटेरियल हैप्पीनेस, दैट्स नॉट रियल हैप्पीनेस. ओके, दैट्स मटेरियल वर्ल्डली लेवल. बट स्टिल यू अंडरस्टैंड दैट इज आल्सो कम्स अंडर द लॉ ऑफ कर्मा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, दूसरों को कभी आप खुश नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई हम लोग को बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनाई गई थी, फादर सन एंड द डोंकी. कितने लोगों को याद है? एक गधे के ऊपर, गधे के साथ बाप और बेटे दोनों जा रहे थे. कोई लोगों ने बोला अरे पागल है, बच्चे को चला के लेके जा रहे हैं, उसको ऊपर नहीं बिठाया. बच्चे को बिठाया. कुछ लोगों ने बोला क्या जालिम बेटा है, बाप चल रहा है, बूढ़ा बाप, जवान बेटा ऊपर बैठा है. एक्सचेंज. बाप चला गया घोड़े पर, क्या जालिम बाप है, बच्चे को चला रहा है, खुद बैठा है. दोनों बैठ गए. क्या जालिम लोग हैं, गधे पे अत्याचार कर रहे हैं. एनिमल राइट्स वाले आ गए, तुम लोग अत्याचार कर रहे हो. गधे को सिर पे लेके तो they took the donkey on their head, they started walking. Don't laugh. That's this problem with us. This is the problem with us. We want to be at par. We want to be at par. उसने उस the minute you go, why in social media and all that, it's called Instagram, Facebook. Last week I was in US. US गया, मैं नहीं गया. कितना बड़ा लॉस हो गया मेरे को. मैं मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. वो गया, वो उसका मजबूरी था या खुशी था, वो गया. Why are you comparing your life with your life, his life? When two cases are unique, different,
घर में दो भाई होते हैं तो उनका स्वाद अलग रहता है, किसी को तीखा पसंद रहता है तो किसी को मीठा पसंद रहता है। घर में दो व्यक्ति का टेस्ट एक जैसा नहीं होता है। आप एक्सपेक्ट करते हो सब लोगों की सोच एक जैसे हो, यू आर फूल। हर व्यक्ति का टेस्ट अलग रहेगा। कोई किसी को वृंदावन में मजा आएगा तो किसी को स्विट्जरलैंड में मजा आएगा। दैट्स हिज चॉइस। व्हाई आर यू रनिंग? यू लिव योर लाइफ एज पर योर चॉइस। व्हाट यू लाइक यू डू, दैट्स गुड। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं फॉलो योर माइंड, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। बट अगर हार्ट ही कुछ 1000 टुकड़ों में टूटा हुआ है, किस टुकड़े के पीछे भागो? द प्रॉब्लम इज आवर हार्ट आर ब्रोकन इन 1000 पीसेस, बिहाइंड विच पीस यू विल रन। एक मन बोलता है चल यूएस चलते हैं, एक मन बोलता है नहीं पिक्चर जाते हैं, एक मन बोलता है नहीं बाहर के होटल में खाते हैं, एक मन बोलता है ये कर, एक मन बोलता है वो कर। यू आर लाइक क्या करूं? एंड देन एडवाइस के लिए क्या है? मेरा फ्रेंड लास्ट वीक होटल में जाके खाया तो मैं आज, मेरा लास्ट वीक पिक्चर, मेरे फ्रेंड एक पिक्चर देख के आता हूँ। लास्ट वीक माय फ्रेंड हैड गॉन टू सम आउटिंग, आई विल आल्सो डू दैट आउटिंग। यू आर नॉट डूइंग समथिंग, यू आर जस्ट एपिंग, यू आर लाइक ए मंकी। एक बंदर पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदा, दूसरा बंदर उसको देख के कूदा। क्यों कूदा? क्योंकि वो कूदा। और वो क्यों कूदा उसको मालूम नहीं, उसको पता नहीं। And last, most important point, we all fear change. We all want a change in life, right? यहाँ पे कोई है जो चेंज नहीं चाहता जीवन में? चेंज चाहता है, सब लोग चाहते हैं। बट हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। We want everything in this world to change, but we don't want to change. But अगर जीवन में आप चेंज चाहते हो, you have to change yourself first. What is the use of changing the whole world? नई सास, नई बहू, नई पता, नई पति, नई पत्नी, सब नई आ जाए, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो सब no use. The same problem. Only the characters will change. It's like no one serial to another serial. Only the characters change. Problem remains the same. एक में सास होती है, एक में बहू होती है. That's all. But it's the same story. So what is the problem? We are not ready to change our mind. We are not ready to change ourselves for something better. क्यों? If I tell someone, sir, why don't you come and learn this, attend spiritual classes? दुनिया क्या बोलेगी? मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, ये उम्र में जा रहा है वहां पे, ये उम्र है क्या? अभी तो मजे लेने की उम्र है। क्या मजे लेंगे? कितने मजे लेंगे? There is no end to it. So many years we have tried. So many channels you have got. When you have not got happiness, at what point you are going to get happiness? When you know the difference, one gets smart. When he knows the difference between body and soul. When you know, आत्मा की खुशी किसमें है? आध्यात्मिक चीज में, क्योंकि आत्मा itself is spiritual. It is not material. And body is material. बॉडी के लिए एसी चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा खाना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा नींद चाहिए, अच्छा कपड़े चाहिए, एवरीथिंग इज गुड। बट आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। दैट्स व्हाई Amazon is not selling anything for the soul, only for the body. The sale is only for the body, remember that. So with this we have to understand that if we want to change our life, we have to change ourselves first. अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे और हम सोचेंगे कि दुनिया बदल जाए, we are fools.